Hello students, let's understand the given question. Water from a tap immerses vertically downwards with an initial speed of 1.0 meter per second. The cross-section area of the tap is 10 to the power minus 4 meter square. Assume that pressure is constant throughout the stream of water and that the flow is steady. The cross-sectional area of the stream is 0.15 meter below the tap is. So question is saying that we are having a tap over here. This is the tap. This is the tab, and initially the velocity of water emerging from this tab is V1. Okay, cross section area having A1. Now this tab has been shifted by the height of distance of this total distance we have given. Suppose h is equal to 0.15 meter. So we know that energy will remain conserved. So total energy at this point should be equal to total energy at this point. So total energy at this point is, if we'll take the reference from this point, so this point A is having potential energy, that is density of the water into G, density of water into G into H, plus kinetic energy half of rho into V1 square should be equal to, at point B, this is only kinetic energy because we are taking reference plane over here. So at a reference line, potential energy will remain, potential energy will 0. So there is only kinetic energy half of rho into V2 square because velocity at this point we are taking V2. Okay. Now we can see that V2 square minus V1 square is equal to 2GH. Okay. So 2 into G value will put 10 into H value we have given 0.15. So V2 square minus V1 square is equal to this value, and we can write here this is equal to 3. So V2 square is equal to 3 plus this value we have given 1. So 3 plus 1. So V2 value we got is equal to 2 meter per second square. Now from the equation of continuity, we can write here that cross section area of A1 V1 is equal to, V1 is velocity at that point, is equal to A2 into V2. Okay, so cross section area in the initial condition is 10 to the power minus 4, speed is 1 meter per second. A2 we have to calculate, 2 we have given. So we can write here A2 is equal to 10 to the power of minus 4 divided by 2, or we can write here 5 into 10 to the power of minus 5 meter square. And according to option, we can say option C, 10 to the power of minus 4 meter square is correct answer for this question. This is the cross section area. I hope you understood the solution. Thank you. In this video, we will discuss question of JEE main physics exam. The question is, a long cylinder vessel is half filled with a liquid. When the vessel is rotated about its own vertical axis, the liquid rises up near the wall. तो एक कोई लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है, इस तरह का, उसमें हाफ ऑफ द लेंथ तक लिक्विड भरा हुआ है. उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको इसकी अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हैं. लेट अस से ये इसकी खुद की एक्सिस हो गई, इसके अबाउट इसको क्या ओमेगा से रोटेट करा दिया मान लो, ठीक है. तो इफ़ द रेडियस ऑफ वेसल इज 5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है, रेडियस ऑफ वेसल 5 सेंटीमीटर है, एंड इट्स रोटेशनल स्पीड इज 2 रोटेशन पर सेकेंड, यानी कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 2 पाई रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है. जब 2 रोटेशन बनाती है 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन पर सेकंड बनाती है 2, ठीक है. तो कितने रेडियन पर सेकंड बनाएगी, एक रेवोल्यूशन में चलती है 2 पाई, तो 2 रेवोल्यूशन में चल जाएगी 4 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है. तो 4 पाई रेडियन पर सेकंड आ गई ओमेगा की वैल्यू, ठीक है. ओके, ओमेगा की वैल्यू. अब हमें बोला गया है कि द डिफरेंस इन द हाइट्स बिटवीन द सेंटर एंड द साइड्स इन सेंटीमीटर विल बी. अब हाइट में डिफरेंस बताना है सेंटर में और साइड में. देखो जब इसको रोटेट कराते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा डायग्राम इसका. लिक्विड जो है वो रोटेट करने लगेगा और अपनी शेप को चेंज कर लेगा, वो स्टिल नहीं रहेगा जैसा कि पहले था, ठीक है. तो इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट लिक्विड रोटेट करेगा और अपनी शेप को ऐसा कुछ पैराबोलिक बना लेगा, ठीक है.
ओके, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पे कोई एक वाटर पार्टिकल है, ठीक है, जिसकी रेडियस यहाँ से x मान लेते हैं। तो इस पे अब जब अगर हम फोर्सेस को काउंट करें तो यहाँ पे इसको घुमाने के लिए पार्टिकल को, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सर्कुलर मोशन, ठीक है, अपनी एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। हर एक पार्टिकल अपनी अपनी एक्सिस के अबाउट अपने अपने अलग अलग रेडियस में सर्कुलर मोशन करेगा इस तरह से, ठीक है। तो इधर लग रहा होगा इस पे एम ओमेगा स्क्वायर एक्स यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और नीचे लग रहा होगा पार्टिकल पे कितना फोर्स, एम जी। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं फोर्स लग रहा है एम जी। लेट अस से दिस एंगल, ये जो वाटर सरफेस वो एंगल बना रही है थीटा, ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है, और ये एंगल अगेन हो जाएगा थीटा, ठीक है, एंगल थीटा हो गया। तो इस अलोंग द वाटर सरफेस जब मैं फोर्स रिजॉल्व करूँगा तो यहाँ पे लिखूँगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा, ठीक है, और एम जी का इधर कंपोनेंट लूँगा तो यहाँ कंपोनेंट बनेगा एम जी साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का इधर कंपोनेंट लेंगे तो एम जी साइन एम जी कॉस 90 माइनस थीटा विच विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से फोर्सेस को लिखते हैं कि भाई एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं, एम से एम को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सीधी सीधी, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, टेन थीटा को लिख सकता हूँ इस कर्व के लिए, जो है पैराबोलिक कर्व है, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा उसकी वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। ओके, अब डी वाई और डी एक्स को अलग अलग कर लेते हैं, सो डी वाई विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी इंटू डी एक्स, ठीक है। ओके, अब इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हो रही है, y की वैल्यू हो रही है आपकी 0 से लेके h तक इंटीग्रेट, ठीक है, क्योंकि जो कर्व है वो कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, वो आपका 0 से लेके और h तक जा रहा है, फुल हाइट तक, ठीक है। और जो x की वैल्यू है वो कहाँ जा रही है, x की वैल्यू 0 से r तक जा रही है, ठीक है। कैसे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में कि जो x है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, रेडियस r के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली हाइट यहाँ पे 0 है और h के बराबर हो जाएगी जब ये अपर पॉइंट के लिए, अपर पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, डी वाई का इंटीग्रेशन हो गया y, लिमिट रखेंगे 0 से h, ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन बाय जी, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और एक्स डी एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे 0 से r। इसके लिमिट्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा नीचे h इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें ओमेगा की वैल्यू पता है, सो ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास 4 पाई, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर 0.05, ठीक है, का स्क्वायर डिवाइड कर देंगे इसको 20 से, तो यहाँ से सॉल्व करने के पास आपके पास लगभग लगभग जो आंसर आएगा एच की वैल्यू वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर के पास, 2 मीटर के पास, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 2 सेंटीमीटर आपको देखना है कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, ये है आपकी हाइट का डिफरेंस जब उसको जो आपका वाटर है, लिक्विड है, उसको रोटेट कराते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, लेट अस गो थ्रू द ऑप्शंस, 2 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। Hello everyone, the top of a water tank is open to air and its water level is maintained. It is giving out 0.74 meter cube water per minute through a circular opening of 2 centimeter radius in its wall. The depth of the center of the opening from the level of the tank is close to. So if you see here, the volume flow rate we know already, it is 0.74 per minute, right? So you can get it in per second. So I will write down, this will be the volume flow rate meter cube per second. Now if you see here,
we know that it will be equals to the area times the velocity, and we want the depth. So if I write down area times of efflux speed, we know that it is under root 2gh. So if I write down, it will be equals to 0.74 by 60, and area here I will write down, it will be pi r square. So you can just put the value of pi and r. It will be 60, and pi is this, and r is r square, it will be this much. So I will equate it with under root 2gh, since efflux speed is that, and so I will write down under root of 2gh, that is the efflux speed. If you solve this, it is equals to 9.8. So it will be equals to 9.8. So from here you can just square both sides, and I will write down h is equals to 9.8 into 9.8, in division it will be 2g. So if you put the value of g here, it will be equals to nearly equals to 4.8 meter, and this will be the answer of this question. Now you can just check for the option. You can see already here B is the correct one. Thank you. Hello students, here's a question. A large open tank has two holes in the wall. One is a square hole on the side L at the depth Y from the top, and the other is a circular hole of radius R at the depth 4Y from the top. When the tank is completely filled with water, the quantities of water flowing out per second from both the holes are same, and the R is equal to. So in this question we have to find the value of R, and we know that the rate of flow from both holes is equal, right? So rate of flow from both holes is equal. So velocity of water at square hole is equals to root 2gh. H is replaced with y because depth is equals to y is given in the question, and velocity of water at circular hole is equals to root 2g is multiplied with 4y because depth is 4y, and the rate of flow is equal, so we can write it as as into vs is equals to ac into vc. Now as means area L square, and velocity is root 2gy is equals to area pi r square into root is 2g 4y, and from here we can calculate the value of L square is equals to pi r square into 2, right? And r square is equals to L square divided by 2 pi. From here we can calculate the value of r, which is equals to L divided by root 2 pi. Now check the options. L divided by root 2 pi. The first option is correct. Thank you. The given question is, consider a horizontally oriented syringe containing water located at a height of 1.25 meter above the ground. So we are given a syringe uh, arrangement at a height of 1.25 meter from the ground. The diameter of the plunger is 8 mm and the diameter of the nozzle is 2 millimeters. So this
piston type structure is called the plunger, whose diameter is given to be 8 mm and this opening diameter is given to be 2 mm. The plunger is pushed with a constant speed of 0.25 meter per second. Find the horizontal range of water stream on the ground. Take G equals to 10. So we have to find this range. Okay, at what range the water is falling from the nozzle. Okay, so we will have, see, initially we have this diameter of the plunger and let us calculate the velocity with which the water is coming out from the nozzle. Let this velocity be Vx. So let's find out Vx. Let this point be x and let this point be y. So let's apply the principle of continuity at the point x and y. So we know that at x and y both the rate of flow of water would be same. That is a into v, area into velocity must be a constant. So at y position we will have area of y into velocity at y must be equals to area at x into velocity at x, right? So we have to find the velocity at point x, which is equals to area of y divided by area of x multiplied by velocity at point y. So area will be given as area at y will be pi into r square. Okay, and radius will be, see, diameter is 4, so radius here will be 4 mm. So we will have here 4 into 10 to the power minus 3 whole square divided by area of the nozzle. We can find as pi r square. Here the diameter is 2 mm, so we will have the radius as 1 mm. So this we will get 1 into 10 to the power minus 3 whole square into the velocity at y is, it is being pushed at a constant speed of 0.25 meter per second, right? So this is 0.25. So we can cancel out the common terms. Pi and pi we can cancel out. 10 to the power minus 3 we can cancel out. And we will get 16 in the numerator multiplied by 0.25. So this will give us the velocity at x is 4 meter per second. Okay, and see, this velocity is in horizontal direction. Okay, now see further, we have to find this horizontal distance r. Okay, so the time taken by the water to fall from this point and to reach this point will be same as, see, water will take same time to cover this vertical distance as well as this horizontal distance, right? So let's first of all calculate the time taken by the water to cover this vertical distance, which is 1.25 meter. So now we will have in the vertical direction, if I apply Newton's second equation of motion, I will get h equals to u y. Okay, it's in the y direction. Okay, in this direction the velocity into t plus half into, c, acceleration at this point will be due to gravity. So this is g t square, where t is the time taken to cover this vertical distance. Now see, the water is coming out of the nozzle is having only x component and its y component is 0, right? So uy will be 0 and we will have h equals to half into 10 into t square, and here h is given to be 1.25. I'll directly place the value 1.25. So from here the value of t square would be equals to this will come out to be 2.5 divided by 10. So this will be 0.25, and if I take square root both the side I will get t equals to 0.5 seconds. That means the water is taking 0.5 seconds to cover this vertical distance. Hence the water will take same time to cover this horizontal distance also. And if I apply the Newton's second equation of motion in the x direction, I will get the range, that is r dash. This must be equals to ux into t plus half into, now see, the acceleration due to gravity is in y direction and there is no acceleration in the x direction, so acceleration will be 0 into t square. So we will simply get r dash equals to ux into t. So this r dash will be equals to ux is this vx only, okay, the x component. So this is 4 multiplied by the time taken is 0.5 seconds. So we will get this horizontal range as 2 meters. So water will cover a horizontal range of 2 meter. This is the required answer. Thank you.
Hello students, today our question is a container of cross-sectional area A resting on a horizontal surface holds two immiscible and incompressible liquid of densities rho and 2 rho as shown in figure. The lower density liquid is open to the atmosphere having pressure P naught. The pressure at the bottom of the container is. So in this question we have to find out the pressure at the bottom at this point. Let's say this point is O. So we have to find out the pressure at O. Now the atmospheric pressure on the liquid of lower density is P naught. So for this height and for this liquid of density rho, the pressure will be rho into G into H, and for this portion, for this height and for this liquid of density 2 rho, the pressure will be 2 rho G H. So the total pressure net P at O will be, let's say this point is not O, let's say this is A. So PA equal to P naught plus rho GH plus 2 rho GH, rho GH due to this liquid and 2 rho GH due to this liquid. So PA will be P naught plus 3 rho GH. This is our pressure at A. So let's see our options. So option 3, 3 rho GH plus P naught is our correct answer. Thank you.